Okay, so let's go for next topic, and this is canonical transformation. So today we will discuss all about the canonical transformation. This is a simple topic, but insight is very important. Calculation wise, it's just a straightforward topic, but insight of this particular thing, why we are using canonical transformation, all these things are very important. So today we will do canonical transformation and then we will go for generating function. So you will always read canonical transformation and generating function together. So this is one of the important message. So let's try to go for canonical transformation and why we need canonical transformation. So first of all, what you have to see that we have learned Lagrangian, and you can see we can initiate any problem into Cartesian coordinate, and then we transform the coordinate according to our symmetry. So we use spherical polar coordinate, we use cylindrical coordinate, we use circular polar, and sometime we have used all the new type of coordinate system, which is popularly known as generalized coordinate, and which can be derived from the configuration of a system. If I am talking about configuration of a system, that means I am talking about the geometry of a system. Are you getting my point? For example, length is fixed, angle is fixed. We have done all these type of problem. ऐसा हम लोगों ने किया है ना? Different types of problem. Now, after then we go to Hamiltonian of a system. And again, we have solved the Hamiltonian. And now here we have to just try to transform the Hamiltonian into new Hamiltonian. Then how we should transform it? Because in a Lagrangian, the transformation is absolutely geometric in nature. We can do it everything in a configuration space. But when we are talking about Hamiltonian, so this is not a configuration space. This all thing are in a phase space. If I am talking about phase space, that means I am talking about generalized coordinate and conjugate momentum. So let's see what we have to do. Actually, we have Hamiltonian of a system, and this Hamiltonian is a function of generalized coordinate, generalized momentum, and obviously function of time. And what we want to change this Hamiltonian, or then we want to change this coordinate system to another coordinate system. So I just want to change it so to the new coordinate system, and this new coordinate system can be written as capital Qi and capital Pi. And similarly, this is my Pi, and this can be written as Pi, capital Qi, capital Pi. So this is your transformation. You have big Q and big P, and this is your Qi. Now, look at this thing very carefully. So if we are talking about the transformation, how we are going to transform it? Some scalar quantity or some geometry should be preserved there. Let me give you the analogy. What is analogy? Suppose we are transforming the thing from Cartesian coordinate to polar coordinate. So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. We can easily calculate all this thing. So this is your r, this is your x, this is your y, and this angle is theta. And we can take the component of x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Just we are taking the component along x and along y. And the thing is that initially your generalized coordinate is x and y, and after transformation your generalized coordinate is r and theta. Now if you just want to calculate the area of a
suppose some elemental area, if you want to calculate it, suppose this is my elemental area, then what will be this area into generalized in xy coordinate? This is dx into dy, isn't it? This is basically dx into dy. And now I just want to calculate the same area into the polar coordinate. Then obviously we have to go for dr into d theta, and r is also there. Are you getting my point? So this dx into dy is actually r dr d theta. Now this can be replaced by this. How you can replace it? So we can just use it geometrically. So you can just take the elemental area, and this elemental area, let's say this is theta, and this is r, this value is dr, and this value is r d theta. Then this area, which is equivalent to dx into dy, is equal to r dr d theta. So in a configuration space, hence we are very much comfortable to do the geometrical calculation. So why we can easily write this particular thing. But this r is nothing but very famous Jacobian of the transformation. And what is this Jacobian? Suppose we have, so what you have initial area element is dx dy, and the final area element is dr d theta, and here you can use the Jacobian of a transformation. And what is this Jacobian of a transformation? If you are just want to calculate this Jacobian, then this is del x upon del r, del y upon del theta, del x upon del theta, del y upon del theta. And we will just take the determinant of this thing. What is this particular thing? This particular thing is very interestingly written here. The change in x with the change in r by keeping theta constant. So here is how my x is going to change with r, and here how my y is going to change with theta. If change in y is equal to change in theta. And if we are just going to see this particular thing, and if you are able to do the calculation part here, then what will happen? Del x upon del r. What will del x upon del r? Cos theta. Del y upon del theta, r sin theta. Del x upon del, sorry, r cos theta. Sorry, क्या हो गया? Del y upon del theta, yes, r cos theta. Sir. Hello, sir. Yes. The code is not visible. Okay, okay. थोड़ा ऊपर कीजिए please. एक मिनट. नीचे का नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Just a minute. Now it's okay? Oh. No, sir. No, Just sir. Just a minute. अब ठीक है? Now it is comfortable? No, sir. Last step जा रही है. अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? Which part is not? जो determinant दिखा है ना second row. ये नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, This- determinant जो आपने लिखा है ना उसमें से second row. ये नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ. Now it's okay? हाँ सर, अब ठीक है. ठीक है? Okay. Yes, sir. Okay. चलो मैं ध्यान रखूंगा. So what you will do? So cos theta, r cos theta, and what is? Sir. Oh, sorry. DIY Wait. मैंने गलत लिख दिया है. Just a minute. Just a minute. So I can just go for the Jacobian of this particular thing. Del x upon del r, and this will be del y upon del r, del x upon del theta, del y upon del theta. So we have to calculate this one. So you can see the symmetry,
and I will also discuss here x and y, r and theta, and then you can just make this particular matrix and you can find the value of this matrix. That means you have to calculate the determinant of this matrix. So how you can calculate this particular thing? This is very interesting. So we have to just go for del x upon del r. So what is del x upon del r? Cos theta. Cos theta. Del y upon del r? Sin theta. Sin theta. Yes, sir, सही है sir. सही है, okay. Now del x upon del theta? Minus r sin R theta. sin Minus r sin theta. Del y upon del theta? R R cos cos theta. R cos theta. And if you will just going to calculate it, r cos square theta minus r sin square theta, and this will be cos square theta plus sin square theta, and that value is equal to r. So now you can see this Jacobian is a very important thing for the transformation. Now, what is the role of this particular Jacobian? The role of this particular Jacobian is that when you are transforming from one coordinate to another coordinate, you cannot transform it arbitrarily. What you have to do, you have to take care of the area of a curve. You have to take care of the dimension of the curve. What is meaning of dimension? That means before the transformation, if this has dimension of length square, after the transformation, this dimension must be there. And if we are not putting this particular Jacobian here, then obviously this has dimension of L square, but this is dimension of length. So we have to put something which will be give the dimension of length such that the whole thing can be dimension of area. So similarly, you can also go for the particularly in the spherical polar coordinate. In the spherical polar coordinate, we have dx, dy, dz, and this can be written as dr, d theta, d phi, and the Jacobian of a transformation. And what will be this Jacobian of a transformation here? You will surprise that this will be nothing but r square sin theta. So, but we doesn't take care of this Jacobian into particularly configuration space because we know all the geometry of a system. We can easily calculate it by geometry such that here we have just easily calculated what is my area element in the polar coordinate and which will be equivalent to dx into dy. And similarly, we can go for 3 dimension here. But when we are going for the generalized coordinate and generalized momentum, this is really problematic. Why it is problematic? Anyone can tell me? Anyone? बताओ पुनीत क्यों problematic है? Sir, एक बार please question repeat कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन जब आप हैमिल्टोनियन के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, means we are just transforming with the generalized coordinate and generalized momentum, old generalized coordinate and generalized momentum to new generalized coordinate and generalized momentum, then this method of working of geometrical calculation is very tough. Why it is so? In case of x and y, we because have this बताओ. Yes. बताओ. sir this Jacobian कोई arbitrary value नहीं हो सकता है. नहीं Jacobian का fixed value होना चाहिए. नहीं, Jacobian is fixed value. What is meaning of Jacobian is fixed value? For the one particular transformation, Jacobian is the one given value. Yes, I am 100% agreed. But where is the real problem lies? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों Jacobian को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर? देखो, जो अल्टीमेट थिंग ये है कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या है? 3 डायमेंशन.
एक्स वाई जेड, इजंट इट? Yes, sir. लेकिन जब आप फेज स्पेस की बात कर रहे हो तो वन डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के करस्पॉन्डिंग कितने डायमेंशन का फेज स्पेस है? 2 डायमेंशन. One is x, another is px. Are you getting my point? Yes, sir. So here you have configuration space and here you have phase space. So suppose here we have a one dimension, this is x length, then for the phase space we have basically x and px, and we have to go for very abstract space that is really abstract in nature. You have to talk about position and momentum simultaneously at the same point of time. Yes, sir. So the one dimensional thing in a configuration space is actually going to transform into two-dimensional thing into phase space. Similarly, you can see the toughness level will become here when you will go for 2 dimension. Suppose for the configuration space is x and y, the phase space will be x, px, y, py. And here you have x, y, z, then this will be x, px, y, py, z, pz. So now you can see if I am talking about the 3-dimensional configuration space, that is going to transform into actually 6-dimensional phase space. 3 for the configuration means dx, dy, dz, and 3 for the momentum dpx, dpy, dpz. And this is one of the very abstract thing to visualize, to work with the geometry. How you can work the 6-dimensional elemental volume? Is that possible? No, sir. No. So why Jacobian is so important? But we can calculate Jacobian for any dimensional space. Yes? Suppose we have 6-dimensional, then Jacobian will be what? Then 6 this cross 6 matrix. this type of some matrix you will calculate, and then you can easily find the value, isn't it? Yes, sir. So we cannot work geometrically in a phase space. We have to introduce mathematics, we have to introduce abstractness in our calculation. So this is one of the biggest challenge. And let's try to figure out what is this Jacobian into phase space. This is very fundamental thing. यहां तक कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? बताइए. Anything you want to discuss here? सर मतलब हम कोई लो डायमेंशन से हाई डायमेंशन से डायमेंशन पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं ना? ये क्या है मतलब मतलब? ये 2 मतलब से समझ में नहीं 4 आया. What do you mean by low transformation to high dimension? मतलब? लो डायमेंशन मतलब सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 3 डायमेंशन है और फेज स्पेस 6 डायमेंशन है. हाँ. तो 3 डायमेंशन से 6 डायमेंशन ये क्या बेवकूफी है? नहीं पहली ट्रांसफॉर्म हो बात तो सकता. बेवकूफियां करना बंद कीजिए. बेवकूफी इसलिए है कि आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को फेज स्पेस में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्पेस टू फेज स्पेस करोगे ना? हाँ यस तो सर. आप कॉन्फ़िगरेशन से फेज स्पेस में क्यों जा रहे हो? नहीं जा रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो लाइक 2 डायमेंशन से हम 4 डायमेंशन ऐसा भाई कुछ 2 डायमेंशन जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है उसके करस्पॉन्डिंग 4 डायमेंशनल फेज स्पेस है. उसके करस्पॉन्डिंग है, वो ट्रांसफॉर्म होकर थोड़ी हो रहा है वो चीज. यस यस सर. आप समझ रहे हो कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हो?
Yes, yes, yes. कुछ से कुछ थोड़ी कर देना है। आप हैमिल्टोनियन को ट्रांसफॉर्म करोगे, लैग्रेंजियन को ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या चाहिए? एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, दैट्स इट। Yes, sir. आर डॉट थीटा डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट तो अपने आप निकल जाएगा ना यहां पर। Yes, sir. लेकिन जनरलाइज मोमेंटम सीधे निकल जाएगा क्या? No. तो आप तो फेज स्पेस से फेज स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जो रियल लाइफ में आपको 3 डायमेंशनल चीजें नजर आ रही है, वो फेज स्पेस में एक्चुअली 6 डायमेंशनल चीजें हैं। मैं बस ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से चीजों को फेज स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, डोंट बी अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट, है ना? अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट और अननेसेसरी कॉम्प्लिसिटी मत बढ़ाइए चीजों में। जस्ट ट्राई टू टेक द थिंग वेरी सिंपल। So now look at what is going to happen. We have a small coordinate qi, pi. This is my old coordinate. And what I want to go into new Hamiltonian, and let us say this new Hamiltonian is basically identified as k, and this is capital Qi, capital Pi, and you maybe have the function of time. There is not any problem. And the challenge is that this k must also follow the Hamiltonian equation of motion, such that at this small q and small p is going to follow the Hamiltonian equation of motion for h. That means del h upon del qi is equal to minus pi dot del h upon del small pi is equal to qi dot. And here, if we are going to transform it, then this k, del k upon del qi is equal to minus pi dot, and del k upon del pi is equal to qi dot. This should preserve. ये होना ही होना चाहिए. And hence this should preserve. Actually this can be only and only possibility that they are going to preserve when we are just going to preserve the phase volume or the phase area or the phase length. If I am talking about phase volume, that means 3-dimensional configuration space, and we are going for the 6-dimensional phase space. That means what we are going to do, we just want to preserve this particular thing. Are you getting my point? Why this is pi qi? Yes, sir. This is for the multiplication. And what we have then this thing is going to preserve something like pi dqi and pi dpi, and that is your J is the Jacobian of a transformation. Now this thing is going to preserve if this Jacobian of a transformation is going to 1. And if this transformation of Jacobian is going to 1, then this is identified as canonical transformation. This is identified as canonical transformation. And yes, the transformation can be two-way. You can go to old coordinate system to new coordinate system, pi, capital Qi, capital Pi, or vice versa. You can also go to capital Qi as capital Qi as Qi and Pi. And similarly, capital Pi is equal to Pi, small qi and small pi. Obviously, same like you can just have x is equal to r cos theta
y is equal to r sine theta, and you can also write r is equal to root under x square plus y square, and theta is equal to tan inverse y by x. Are you getting my point? Yes, sir. So this is two-way transformation. So you can put Jacobian here also if this is 1, isn't it? Because 1 by j is equal to Jacobian for the reverse transformation. So 1 can be adjusted there, and when j is equal to 1, this is basically identified as what? Canonical transformation. And what is this j? This j is nothing del q upon del q, del p upon del p, del p upon del q, del p upon del del q upon del p, and del p upon del q. And the mod value is there, means it can be -1, it can be +1. The magnitude is going to 1. You have to always take care of this thing. When this is going to happen, then you have del q upon del q, del p upon del p upon क्या कर दिया हूं यार? Just a minute. क्या लिख रहा हूं? Wait. Del q upon del q, del p upon del q, and del q upon del p upon del p. Okay, this is my Jacobian of a transformation. We are talking about qp, so q and p. इस तरह भी लिखते हैं. So what will happen? You can see. And the mod value of this is equal to 1. So what is meaning of that? It is Jacobian. Also, canonical transformation. So this is, if you are going to open it, del q upon del q, del p upon del p, minus del q upon del p into del p upon del q, and this must be equal to 1. What is this particular thing? Poisson bracket of q and p. This is exactly Poisson bracket of q and p. This is Poisson bracket of q and p, and if this is going to be 1, these are canonical conjugate variable, and a small q and a small p is also conjugate variable. So this is going to be 1, then obviously the transformation is canonical. So if I am talking about this Poisson bracket, this is nothing but the Jacobian of transformation. Are you getting my point? This is nothing but the Jacobian of transformation. Simple. So in the examination, people will ask you, they will just give you transformation, and they will ask whether it is canonical or not. You have to always take care of this particular thing. ठीक है? So let's try to solve the different types of problem. यहाँ तक कुछ पूछना है? Sir. Sir, just curiosity से था sir question कि canonical transformation important क्यों है sir? It could have been 2, it could have been 3 Jacobian value. Sorry? Sir, I was asking कि canonical transformation important क्यों है sir? क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रिजर्व करके रख सकता है. Okay sir. अगर वो कैनोनिकल नहीं होगा तो हो सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिजर्व नहीं हो. Yes sir. ठीक है? Yes sir. सर नॉन कैनोनिकल भी हो सकता है ना, मतलब वैल्यू 1 छोड़ के अलग भी आ सकती है ना? अलग आ सकती है, बट उसका कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है. ओके देखो, आप कैनोनिकल का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जैकोबियन 1 है, मतलब जो पहले dq dp था बाद में भी dq dp से आप काम चला ले रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर ये ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बता रहे हैं ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कि क्या ओल्ड क्या मतलब? जैसे अभी तो हमने कार्टेशियन से आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका,
लोगों को ये समझ में नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। आप ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हो इन जनरल? सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों वेरी को। गुड, दैट्स इट। हो सकता है ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम करके भी दिखाऊंगा, हो सकता है कोई एक स्मॉल क्यू और स्मॉल पी में आपने एक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा। अच्छा, बाय द वे, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? हम अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लेके आते हैं ना। हाँ, इक्वेशन मोशन तो सबका निकलेगा, लेकिन सॉल्व करने का मतलब क्या है? उसके अंदर बताओ बताओ बताओ। उसकी एनर्जी ये- बता रहे थे लास्ट हम लोग ना कि कंजर्वेशन है। नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन सॉल्व वेरिएबल करने का मतलब क्या है? एनीबॉडी एल्स? इक्वेशन तो का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आए। बेसिकली आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाते हो फाइनली किसी भी इक्वेशन को, तभी तो सॉल्व कर पाते हो, यस सर। अदरवाइज तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो इंसाइटफुल क्यों है ये, कि सपोज करो आपने स्मॉल क्यू और स्मॉल पी में चीजों को सॉल्व करना चाहा। थ्योरेटिकली तो आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को 100%, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैथमेटिकल आपकी जो एबिलिटी है, या फिर इसके अंदर इस तरह की मैथमेटिक्स आ जा रही है कि चीजों को हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल करने में मुश्किल हो रही है, कांस्टेंट ऑफ मोशन लेने में मुश्किल हो रही है, इनिशियल कंडीशन हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। देयर एन नंबर ऑफ वे दैट यू कैन हैव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब हम क्या करें? ऐसे ही बैठे रहें? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसकी सिमेट्री नहीं आइडेंटिफाई हो सकती, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? जैसे आपको याद होगा जब हमने लैग्रेंजियन का एक क्वेश्चन किया था, तो हमने देखा था कि भाई वो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व पता कर पा रहे थे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व उसके बारे में नहीं बता पा रहे थे। याद है क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने क्लास किया हो तो? यस सर। और जैसे ही हमने उसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया, तो बहुत इजीली हम बता रहे थे कि चलो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है जेड डायरेक्शन का, और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप जाकर के अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, ठीक है। सो आप ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही करते हो तो आप सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, साथ साथ उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कम करते हुए। तो हैमिल्टोनियन में भी तो आपको यही काम करना होगा, नहीं? सर। हो सकता है कि आपको हैमिल्टोनियन देखने में, जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने जब कुछ क्वेश्चंस किया था, आपने देखा था कि भाई हमारा लैग्रेंजियन तो इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन फाइनली निकल करके फ्री पार्टिकल आ रहा है। किया था ऐसा ना? यस सर। वैसा ही यहां भी बहुत सारी चीज हो सकती है। यहां भी जो चीजें हैं, हो सकता है कि हम स्मॉल क्यू स्मॉल पी में सॉल्व करें और हमें समझ में ही नहीं आए वो क्या है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए, वो अगर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हम लें तो कैसे लें, उसका कुछ तो लिटमस टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकली यहां पर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ना? तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है? तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही आप देखोगे, चेक करोगे, एंड दैट सिंपलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को मिलने के बाद हो सकता है आपका हैमिल्टोनियन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहा था, वो बहुत ही सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन देने लगे। ठीक है ना? और हम प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी, ऐसे प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि हमारा टफ से टफ हैमिल्टोनियन चला जाए। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में हम लोग उसको जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हुए करेंगे, बिकॉज मैंने कहा था क्लास के शुरुआत में ही कि जनरेटिंग फंक्शन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सेम पार्ट। ओके, बट आज की क्लास में हम लोग अपने आप को जस्ट फोकस रखते हैं कि कैसे हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर, चलें क्या? कुछ प्रॉब्लम देखें? यस सर।
सो आई एम जस्ट गोइंग टू बुक द गोल्डस्टीन के बुक से ही हम लोग सारे प्रॉब्लम करेंगे. सो दे ऑल आर अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. सो हम लोग एक साथ ही सारे को देखते हैं. चलो, so let's go for first problem. This is Q is equal to Q cos alpha minus P sin alpha. P is equal to Q sin alpha plus small p cos alpha. So we have to just check whether this transformation is canonical or not. क्या करना होगा बताओ? सिंपल, देख लेते हैं पॉइजो ब्रैकेट का यूज करके, है ना? Yes, sir. So we will do del Q upon del Q, del P, sorry, del capital P upon del P minus del Q upon del P into del P upon del Q. ये तो चेक करना है ना? So basically, what is this value? And alpha is some constant. So this value is cos alpha. Again, this value is cos alpha. This value is, बताइए, del Q upon del P Minus minus sin sin alpha. Del P upon del Q is alpha. sin alpha. What you will get? Cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. And yes, this transformation is what? Canonical in nature. कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? कुछ रोटेशनल जैसा ट्रांसफॉर्मेशन. ये चूंकि बहुत ही सिंपल है तो हम थोड़ा बहुत विजुलाइज भी कर सकते हैं. So ये P है, ये Q है, स्मॉल p एंड स्मॉल q. हम क्या कर रहे हैं? पूरी चीजों को कुछ रोटेट कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज Q, दिस इज P. और आप अगर देखोगे तो इसको आप मैट्रिक्स के थ्रू भी दिखा सकते हो. QP इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा, sorry, cos alpha minus sin alpha and cos alpha. And here you have small q and small p. So this is some sense of rotation with angle alpha. क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, that is different issue. But इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो कि पूरे के पूरे सिस्टम को रोटेट कर दिया तो हो सकता है कि चीजें डायगोनलाइज हो जाए. Diagonalization is also very important. Are you getting my point or not? Yes, sir. डायगोनलाइजेशन भी किसी चीज को अगर आप मैट्रिक्स के रूप में देख रहे हो, सिमेट्री के रूप में देख रहे हो, अगर आप उसे डायगोनलाइज कर देते हो तो एक तरह से आप उसे सॉल्व कर देते हो, है ना? Yes, sir. कि किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा आइगन वेक्टर है वो आपको तुरंत पता चल जाता है. जस्ट आपका जो एक्स वाई जेड है वो आप यूनिवर्सल एक्स वाई जेड आई कैप वाई कैप जे कैप आप ले लेते हो, है ना? तो समथिंग यू कैन जस्ट इन स्पाइट ऑफ लुकिंग दिस यू just want to see the whole system like this, है ना? ऐसे देखने के जगह पर आप ऐसे देखना चाह रहे हो चीजों को, something like this. But this transformation is canonical, so you can use this type of transformation and it will depends which type of problem you have. ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन हर एक जगह यूज कर लो. प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है. And it is very difficult to intuitively tell that कि यहां पर हम ये कर लेंगे. This will come from the experience. Okay, let's go for next one. So this is again Goldstein unsolved problem. Log 1 upon q sin p and p is equal to q cot p, है ना? q is equal to q cot p. बोर्ड का सेटिंग ठीक नहीं है. Okay, so let's try to go for this. Let us check whether it is canonical or not. क्या करेंगे? Del q upon del q del p upon del p minus del q
अपॉन डेल पी अपॉन डेल क्यू। इसे चेक करेंगे, अगर ये 1 हो जाता है दैट मीन्स इट इज कैनोनिकल इन नेचर। कैसे करोगे? 1 अपॉन क्यू, लॉग है तो 1 अपॉन क्यू, सॉरी 1 अपॉन क्यू साइन पी, और क्यू को भी डिफरेंशिएट करना है तो साइन पी कांस्टेंट रहेगा, और क्या होगा -1 अपॉन क्यू स्क्वायर। यस सर। ठीक है ना? देखो कैलकुलेशन मेरे देखते रहना, ठीक है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ। एंड डेल पी अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा? ये -q cosec स्क्वायर p। -q कोसेक स्क्वायर पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी। फिर से देखें, 1/1 अपॉन क्यू एंड दिस वैल्यू इज साइन पी, और 1/q ऐसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? कॉस पी। एंड डेल पी अपॉन डेल क्यू क्या हो जाएगा? कॉट पी। क्या मिल रहा है वैल्यू, जरा देखो तो। ये क्यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जा रहा है, साइन पी भी कैंसिल हो जा रहा है, दिस इज माइनस माइनस प्लस, पर cosec दिस स्क्वायर इज p minus कॉसेक cot स्क्वायर पी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर पी। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 1, yes sir। इजंट इट? ये तो होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस यस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कैनोनिकल। लेकिन यहां मैं बता नहीं पा रहा हूं, या फिर हो सकता है किसी के पास ऐसा इंट्यूशन हो कि वो बता सकता है कि वो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे यहां पर मैंने बता दिया ओके हाँ हम रोटेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कैन आर यू एबल टू विजुलाइज दिस थिंग? क्या कर रहे हो, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? नो सर। नहीं विजुलाइज कर सकते, क्यों नहीं? इट इज वेरी क्लमजी। नहीं, log 1 अपॉन क्यू साइन पी, पता नहीं क्या हो रहा है, बट at least at this point of time I can say this is canonical in nature, so you can use this transformation to simplify some problem. तो ऐसा नहीं कि कोई भी आर्बिट्ररी रिलेशनशिप निकाल लो और उसको आप हैमिल्टोनियन में यूज कर लो, नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। देयर आर सम लिटमस टेस्ट दैट यू हैव टू यूज इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स ट्राई टू गो फॉर वन मोर। तो इसके में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, अब तो नहीं आते हैं इसके क्वेश्चंस, लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि सबको पता है क्या करना रहता है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दैट दे विल आस्क यू व्हाट विल कंडीशन सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So we have a q is equal to q to the power alpha and cos beta p, and p is equal to q to the power alpha sin beta p, and we have to find the alpha and beta. We have to find the value of alpha and beta such that this transformation is canonical. आपको ये निकालना पड़ेगा कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है। क्या होगा? डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल क्यू। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। व्हाट विल हैपन? अल्फा क्यू अल्फा माइनस 1 है ना, एंड कॉस बीटा, ध्यान देना कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, del p upon p q to the power alpha beta cos beta p. When you are going to differentiate, sin beta p is what? Cos beta p, beta will be there, minus del q upon del p. क्या होगा जरा बताओ? del p upon del q upon del p. So you have q to the Minus power beta. alpha minus
beta sine beta p, and next is del p upon del q. So this is alpha q to the power alpha minus 1 and Sine sine beta p. beta p. And that should be equal to 1 because it is given that this transformation is going to be canonical in nature. So देखते हैं क्या हो रहा है. So we have alpha beta q to the power 2 alpha minus 1, and you have cos square beta p, and you can take this thing common, q to the power 2 alpha minus 1 and alpha beta, and here is sine square beta p is equal to 1. Minus minus plus sign will be there. So what is this value? This value is 1. So we have alpha beta and q to the power 2 alpha minus 1 must be equal to 1. So now here is 2 unknown. So we have to go for 2 equation. So if this should be 1, that means 2 alpha minus 1 must be 0. It should be independent of q. First equation is that. And what is your second equation? Alpha and beta is equal to what? 1. So that implies alpha is equal to 1 by 2 and beta is equal to 2. Yes, sir. Everyone is comfortable? है ना? So this type of problem will always come into your exam and you can easily just try to do it comfortably. So I am just giving you one homework problem. Let's see how you can visualize it. I will solve it in the next class. Okay, let's try to go for this. देखते हैं आप इसको कैसे solve करते हो. दूं क्या? होमवर्क करोगे? करते तो हो नहीं आप लोग. Yes, sir. हाँ? करते हैं sir. कहाँ करते हो? Q1 is equal to small q1, P1 is equal to small p1 minus 2 p2, q2 is equal to small p2 and p2 is equal to minus 2 q1 minus q2. What do you have to do? You have to just prove this transformation is canonical. How you will approach it? अगर अब क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा. इसी कारण मैंने पहले आपको दिया करने के लिए. आसान आसान वाले पार्ट मैंने खुद किए. ये भी आसानी है अगर आपको पता है क्या करना है तो. हाउ यू विल गो फॉर दिस? बताओ पुनीत, हर बार में तुम आंसर देते हो, इसका आंसर दो. पुनीत सॉटन, हाउ यू विल गो फॉर दिस? So we will go for like Q1 and P1 के लिए पहले चेक करेंगे. नो. ओके, दिस इज ऑल्सो कि आपके यहाँ पर लकली दोनों 1-1 आ जाएगा. बट हाउ यू विल गो फॉर इट? सर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए सम करेंगे. दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए सम करोगे तो आपका 1 आएगा. जस्ट चेक करके देखना. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जरा चेक करो. मैं अभी नहीं दूंगा हिंट. एनीबॉडी एल्स? सम न्यू स्टूडेंट? पिनाकी इज देयर? वो है क्या? Q2 B2 का. बताओ क्या करोगे? नेहा बताओ क्या करोगी? सर जेकोबियन से देखेंगे. Exactly. Very good. So what you will do? You will just calculate the Jacobian of a transformation. So Yes. once you will calculate the Jacobian of a transformation, you will figure it out that whether it is canonical or not. So आपको basically क्या करना है इसका? Jacobian निकालना. Jacobian निकालना है. ठीक है? Yes, sir. Are you getting my point? हाँ?
कैपिटल Q1 P1 चेक करके और Q2 P2 चेक करके नहीं आएगा क्या आंसर इसका? That is not a correct thing ना, you have to find the Jacobian of a complete thing. Are you getting my point? ओके जैसे अब देखो, अब मैं आपको फिर से ले चलता हूं इनिशियल पॉइंट के ऊपर। जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है x y z, x की वैल्यू क्या पुट करते हो? r cos थीटा, y की वैल्यू r sin theta. r sin थीटा एंड z इज इक्वल टू z। इसी तरह का चीज तो है कुछ, यस Yes sir. ऐसा ही है ना। इसको तुम Q1 कर दो, इसको तुम P स्मॉल कैपिटल, इसको कैपिटल Q1 कर दो, कैपिटल P1 कर दो, किसी भी को भी क्या कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करते हो? जैकोबियन ही तो निकालते हो, isn't it? So here you have to also calculate the Jacobian. So you will just figure it out. If Jacobian of a transformation is 1, then they are canonical in nature. ठीक है? Yes? So just do it homework. And tomorrow we will go for our next level of transformation, that is what? Generating function. ठीक है? बाय द वे, आपने कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल चीजें तो देखी होगी। पूरे जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ ज्योमेट्री नजर आ रहा था आपको? Yes sir. कहाँ नजर आ रहा था? Sir, like some sort of rotation is there. जैसे आपने पहले वाला हाँ, एग्जांपल किया। वो तो ठीक है। कैलकुलेशन में कहाँ नजर आ रहा था? कैलकुलेशन में आपको नजर आ रहा होगा cos स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 1। दिस इज वन टाइप ऑफ ज्योमेट्री है ना। या Yes sir. cosec स्क्वायर क्यू माइनस cot स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 1। ये सारा क्या है? अगर ये चीज प्रिजर्व होता, आप देखो कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें आ रही है तभी हो रहा है कैनोनिकल, है ना। Yes sir. So you have to little bit do some mind storming on this particular chapter. ठीक है? Anyway, so but exam के लिए straightforward, you have to just figure it out. What is the condition of canonical transformation, and you can just do the partial differential efficiently. That is only thing for the examination, nothing else. ठीक है? And how you can find the Jacobian of a transformation. So या तो आप Poisson bracket से निकाल लो या फिर Jacobian of a transformation निकाल लो। ठीक है? Yes sir. चलो, okay, thank you. Thank you sir. Thank you, sir.